इज़ एक्चुअली बिल रिसीवेबल, पर यहाँ बुक में भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ही मैंशनड है, सो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल, आई एम जस्ट टेकिंग सिंपली एज बिल ऑफ एक्सचेंज हियर. द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ फॉर 3000. Bank is charging rupees 60 as commission and is giving us an amount of 2940. Now this is the journal entry. Now अब ये जो बैंक वाला ट्रांजेक्शन है ये आपको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो दिस हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस, यू विल बी राइटिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कोर्स. सो हियर on 18th I will write to bill of exchange account and amount, because I am receiving it from the bank, I am getting the information from the bank that I have received this amount. So this I will be writing in my bank column. And how much is the amount? It is 2940. So 2940 in my bank column. Now moving to the next one. On 21st of April, Karan, who owed us rupees 2000, became insolvent, so he paid 60 paisa in a rupee. Karan was supposed to pay us rupees 2000. Now he is insolvent, bankrupt हो गया, and he is paying only 60 paisa in a rupee. 60 paisa in a rupee means he is paying us 1200 rupees instead of 2000. So we are receiving money, हमें पैसा तो receive हो ही रहा है. So here I will write to the name of the person from whom we are supposed to get the money, Karan, and the amount that I am receiving, that is 1200. It is not mentioned whether we have received through cash or bank, so we will be considering it as cash only. Then next is on 23rd, bank interest rupees 250 and bank charges rupees 100. Bank interest we have received, bank interest है तो हमने receive ही किया होगा, and bank charges, that means the bank has asked us to pay the money for certain facilities, so it has to be on the expenses side, that means payment side. So ये जो interest हमें receive हो रहा है उसकी entry मैं यहाँ पे बनाऊंगी on 23rd of April to interest account. And now another important thing, whenever bank pays the interest, it is directly deposited in our account, it is not provided to us in cash. तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी हमारा सीधा बैंक कॉलम में ही आएगा फॉर 250 रुपीज़, एंड वी आर पेइंग बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस हम पे कर रहे हैं. सो हियर ऑन 23rd of April आई विल राइट बाय बैंक चार्जेस, and in bank column I will write the amount of bank charges, that is rupees 100. So this is my bank column and here I will write 100 rupees. Then on 26th, honored our acceptance of bill of exchange to Ratan for 1200 by issuing a check. Honored our acceptance. Honored basically means to pay, that means to clear out financially. Honored our acceptance of bill of exchange to Ratan, that means हमें कुछ पैसा जो है रतन को पे करना था, and now we have paid it for rupees 1200 by issuing a check, and we have paid through check. So this is our payment, so I will be recording it here. I will write here 26th of April, and क्योंकि ये bills of exchange का payment है, so I will be writing here bills of exchange account, and we have paid by issuing a check. इसका मतलब हम बैंक कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे for 1200. Then withdrew cash from bank for office use 2500. हमने बैंक से पैसा निकाला है, so your entry is basically cash account debit to bank account. So since it's a contra entry, we will be recording it on both the sides. Cash account debit, so by cash account to bank, so I will write here to bank. This is on 28th. कॉन्ट्रा एंट्री है तो आप लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी लिख सकते हो यहाँ पे टू शो दैट इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री. एंड नाउ द अमाउंट इन्वॉल्व इज 2500. रिमेंबर कॉन्ट्रा एंट्रीज का कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं. अगर बैंक लिखा है तो अमाउंट आएगा कैश कॉलम में. सो माई कैश कॉलम इज हियर, आई एम राइटिंग 2500 हियर, एंड कैश लिखा है तो अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में. दिस इज माई बैंक कॉलम, आई विल राइट 2500 हियर. Next,
On 30th of April, bank is asked to issue draft to Ravi and Company for rupees 3200. It charge commission of rupees 120. बैंक इज आस्क्ड टू इशू ड्राफ्ट टू राय एंड कंपनी. हमने बैंक को कहा है कि राय एंड कंपनी को एक ड्राफ्ट भेज दिया जाए, तो हमारे पास से तो पैसा गया, सो वी विल बी राइटिंग हियर बाय राय एंड कंपनी. और क्योंकि पैसा बैंक से गया है, सो वी विल बी राइटिंग इन द बैंक कॉलम ओनली, दैट इज 3200 and I will write the date here, 30th of April. And beside this, bank has also charged a commission of 120 against it. इस काम के लिए बैंक ने 120 का कमीशन दिया है. So again we will be paying to the bank, but again through the cash, through the bank account only and not in cash. So I will write here by commission. I will in fact write bank commission, और बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 120. Then coming to the last transaction, on 30th of April, it is decided to keep rupees 5000 as cash in hand. Necessary adjustment be made through bank account. It basically says whatever balance is there in cash, out of that only 5000 is to be kept in cash column, cash, and remaining is to be transferred to bank account. Now what we are going to do is, हमें अपने बैंक अकाउंट में 5000 का बैलेंस चाहिए. तो मैं यहाँ पे, दिस इज माई बैलेंस, so my bank column should get a balance of only 5000. So what I'm going to do is, I will leave one line here, I will leave this line here, now what I have done is, I have, in order to deal with this statement, I have totaled my 4 columns. बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम का अगर आप पेंसिल से टोटल करके लिखोगे, दैट विल बी 38,940 हियर. कैश कॉलम का टोटल करोगे, इट विल कम आउट टू बी 21,700. ऐसे ही दिस साइड ऑल्सो, इफ यू टोटल अप, इट विल बी बैंक कॉलम 14,650 एंड कैश साइड यू विल गेट 13, क्योंकि एक ही आइटम है यहाँ पे. नाउ आई विल फाइंड अ बैलेंसिंग फिगर. पहले कैश की बात करते हैं. योर कैश कॉलम इज 21,700. नाउ दिस 21, दिस साइड इज 21,700 and this side is 13,000. You will find a balancing figure which will come out to be 8,700. Now according to the question, this balancing figure should not be 8,700 but it should be 5,000 only. अगर ये 5000 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, so if I make it 5000, तो कितना बचेगा? 3700. तो इसका मतलब 3700 मुझे बैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. Now when I will transfer it in my bank, so my entry will be bank account debit to cash account. And I will be transferring 3700 in my bank. अब ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई. इसे आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रा एंट्री की तरह से अपनी कैश बुक में एंटर कर दोगे. आई विल राइट हियर बाय बैंक. आई एम रबिंग ऑफ दिस बैलेंसिंग फिगर दैट आई हैव रिटन हियर. आई विल राइट हियर बाय बैंक अकाउंट 3700. ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी. एंड दिस साइड आई विल राइट टू कैश अकाउंट and in my bank column I will write 3700. Now when I will draw my balancing figure as in other normal questions, I will get a balance of 5000 in my cash account. So let's do it. If I draw a balancing figure here, so it will be, I have to re-total it क्योंकि अभी ये 3700 भी इसमें ऐड हो गया है. So it will increase now and it will be 42,000
890. Same I will write here. And I will find out a balancing figure for my question here. अब मैं इसकी balancing figure निकालूंगी. So my balancing figure, it's coming at 28,240. So my this side is equalized. अब मैं इस साइड को बैलेंस कर लेती हूँ. 21,700. इस साइड भी मेरा 21,700 आना चाहिए. मैं ये 1,300 को इरेज कर रही हूँ यहाँ से. And when you will find the balancing figure, that is 21,700 minus 13,000 and 3,700, you will get a balancing figure of 5,000. So this is how you will arrive at your correct answer. And these balancing figures you have to draw like in other questions. ये अप्रैल का मंथ था, so 1st of May you will write. You will bring the balance to the new month and 28,240 here and 5,000 here. So this will be considered as your final answer for your cash book. So now you will be trying out few questions. ये question एक अलग type का question था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में किया. And now you will be trying out. I'm giving you few questions because ये chapter हम पहले भी कर चुके थे. I mean ये concepts हम पहले भी cover कर चुके थे. Now I'm writing here. You will be doing question number 16, 17, 18. Then question number 23rd, 24th and 25th. That's it. 6 questions I'm giving you, and you have 2 days time, that is today's and tomorrow.